Morning students, hope you are all studying well. In last video we had completed some of the units of concentrations, that is molarity, mole fraction, percent mass by mass, percent weight by volume, then molality, mole fraction, weight by volume. These many units we had completed. Okay, now we have to move with some more units of concentration, that is 5 we had done, 6th one, percent V by V. What is percent volume by volume? It is volume of solute. If both are liquid, then only this unit will be applicable, upon volume of solution multiplied by 100. Both the volume must be 100. When solute is liquid, solvent is also liquid. At that time we will use this unit of concentration. Suppose it is given 20 ml ethanol present in dissolved in 100 ml water. What is percent V by V? This is the question. Solute is ethanol, which is 25 ml. Solvent is water, which is 100 ml. So what is percent V by V? Volume of solute 20 divided by total volume of solution 20 plus 100 multiplied by 100. Don't cut this 100, okay? It would be 20 by 120 multiplied by 100. So it is 200 divided by 12, 100 divided by 6. So it is 16.66% V by. This is the answer. How to define it? Volume of solute present in 100 ml of solution. Suppose मैंने ऐसे लिख के दिया 10% V by V ethanol aqueous solution. Ethanol aqueous solution. What it mean? It means that 10 ml of ethanol dissolved in water to prepare 100 ml solution. Total volume of solution is 100 ml. This is percent V by V. This will also depend on temperature because it also have a volume in its formula. इसको बोलते हैं मास या वॉल्यूम परसेंटेज. क्या कहलाता है? वॉल्यूम परसेंट. दिस यूनिट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट. नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज ppm, parts per million. ppm, which is called parts per million. When solute quantity is very less, अगर सॉल्यूशन में बहुत कम सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो हम इस यूनिट को यूज़ करते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. जैसे पहले जो पोल्यूशन होता था उसको मेजर करते थे कि आज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में 20 ppm, आज नाइट्रिक ऑक्साइड एयर में या पोल्यूटेंट है वो एयर में 40 ppm. बट હવે તો પોલ્યુશન એટલું વધી ગયું છે કે નહીં, હવે નોર્માલિટી મોલારિટીમાં ગોતવું પડે, ppmમાં ન ચાલે. તો ppm માટે કઈ યુનિટ યુઝ કરવાની? ઇફ ધ સોલ્યુટ dissolved is very less. जैसे ऑक्सीजन dissolved in water, ऑक्सीजन बहुत ओछું પાણીમાં dissolved હોય, only 4%. At that time we use the unit of concentration which is called parts per million. So next unit is ppm, which is full form parts per million. This is called ppm. What is the definition of actually ppm? It is milligram of solute in 1 liter solution. That is called ppm. Milligram per liter, and unit શું થાય? Milligram per liter. This is called ppm, that is parts per million. Suppose अपन को दिया है कि 20 ppm calcium ion as in the hard water present. Calcium ion present in hard water. Hardness of water is due to magnesium and calcium ions. तो कोई पूछे आपसे कि कितना वजन प्रेजेंट है कैल्शियम का, वी डोंट नो व्हाट इज ppm. हाउ विल यू इलेबोरेट इट? 20 milligram of calcium ion present in 1 liter. And suppose we have 10 liter waters, then 200 milligram of calcium present. So what do you mean by ppm? Parts per million. Milligram of solute present in 1 liter of solution. That is known as parts per million. ppm. इसको ppm
एम बाय वी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं एम बाय वी? क्योंकि हम सॉल्यूट का मास ले रहे हैं और सॉल्वेंट का सोल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास अपॉन वॉल्यूम. हाउ टू राइट? वेट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम divided by volume of solution in liter multiplied by nothing to be multiplied. This is the definition of ppm mass by V. If we convert this milligram into gram and this liter into ml, then weight of solute in gram calculation माटे upon volume of solution in ml कितना आएगा? 10 raised to power 6. આનું 10 to power 3, આનું 10 to power -3 लीटर ने ml में લઈ જશે એટલે ઉપર જશે એટલે 10 to power 6 આવશે. So 10 to power 6 मतलब million हुआ. That's why it is called parts per million. Weight of solute in gram, volume of solution in ml and multiplied by 10 to power 6. That is called ppm weight upon volume. जैसे अगर लिख के दिया है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है और वो प्रेजेंट है 10 लीटर पानी में, कितना ppm होगा? तो ppm वुड बी 5 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड लीटर को ml में चेंज करना पड़ेगा. सो इट विल बी 10,000 ml मल्टीप्लाइड बाय 10 to power 6. 4 zeros यहाँ से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा. सो इट इज 500 ppm. और आप डेफिनेशन से भी निकाल सकते हो 5 ग्राम इन 10 लीटर और वी कैन से 1 gram how many milligram? 1000. So we can say 5000 gram in 10 liter. तो 1 liter માં કેટલા મિલીગ્રામ? મિલીગ્રામ પર લીટર ગોતવાનું છે. આ છે 5 ગ્રામ 10 લીટરમાં. 1 લીટરમાં કેટલા ગ્રામ? 0.5. 0.5 ગ્રામ એટલે કેટલા મિલીગ્રામ? 500. So 500 milligram is present in 1 liter water. This is called ppm, that is parts per million. Sometimes so happens that only weights are given. दोनों के वेट हो, weight of solute and the weight of solvent. At that time we will use ppm W by W. ppm weight by weight. क्या होगा इसका मतलब? weight of solute in gram, weight of solution in gram multiplied by 10 to power 6. This is called W by W, ppm. Or sometimes parts per million calculated V by V. Volumes are given for both. Volume of solute in ml, volume of solution in ml multiplied by 10 to power 6. That is also known as ppm W by V by V. So ppm V by V and ppm W by V दोनों के फॉर्मूला वॉल्यूम है. So it is dependent on temperature, but this unit won't depend on temperature. Parts per million. Now one more unit we are studying and that is नॉर्मलिटी. टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी वेयर इट इज गिवन, क्वेश्चंस आर देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बट इट्स नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. दैट इज नॉर्मलिटी. नाउ वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज नॉर्मलिटी. बिफोर स्टडिंग नॉर्मलिटी we should know what is equivalent weight. Very important topic. Equivalent weight. पहले वो पढ़ते हैं फिर नॉर्मल. क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट. सबसे पहले बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से पढ़िएगा. हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज atomic weight divided by its valency. Very important. Suppose we want to calculate equivalent weight of sodium. Atomic weight of sodium is 23, its valency is 1, so equivalent weight is 23. What is equivalent weight of calcium? Calcium का atomic weight 40, its valency 2, so it is 20. What is equivalent weight of aluminium? Equivalent weight of aluminium is atomic weight 27, valency 3, so it is 9. What do you mean by equivalent weights? 9 gram of aluminium is equivalent to 20 gram of calcium, which is equivalent to 23 gram of sodium. जैसे हम मार्केट में कोई सामान लेने गए, 3 बच्चे, तीनों को 20-20 रुपया दिया,
एक बच्चा 20 रुपए में 4 पेंसिल लाया, दूसरा बच्चा 20 रुपए में 2 एप्पल लाया, वैसे महंगी है एप्पल लेकिन लाया, तीसरा बच्चा 20 रुपए में 2 ऑरेंजेस लाया या 3 ऑरेंज लाया, व्हाट विल टेल 3 ऑरेंजेस इक्विवेलेंट टू 2 एप्पल इक्विवेलेंट टू 4 पेंसिल्स। मतलब पैसों से वो सब इक्विवेलेंट है, एप्पल थोड़ी ऑरेंज के इक्विवेलेंट होता है, ऑरेंज थोड़ी पेंसिल के इक्विवेलेंट हो रहा है। व्हाट सेंस वी आर टेलिंग रिगार्डिंग રૂપી વેલ્યુ, બધા 20 જ રૂપિયામાં આવ્યા છે એટલે ઇક્વિવેલન્ટ વર્ડ યુઝ થાય. ઓકે, સો હિયર we can say that 9 gram equivalents of aluminium equivalent to 20 gram of calcium equivalent to 23 gram of sodium. Similarly we can find for negative ion, what is equivalent weight of oxygen? Oxygen ka atomic weight 16 divided by 2, so it is 8. What is equivalent weight of nitrogen, nitride ion? So it would be 14 divided by 3, so we'll get the answer. Equivalent weight means the atomic weight divided by its valency. Okay, now equivalent weight of acids. What are equivalent weight of acids? We know what are acids. Acids are the substances which when dissolved in water produce H plus ions. What are acids? Acids on dissolving in water they produce H plus ion or hydronium ion. The number of hydronium ion or hydrogen ion they produce on dissociation is called basicity of acid. See, suppose we have HCl. When it dissolved in water it gives H plus Cl minus. Suppose we have sulfuric acid. When it dissolved in water, it formed 2H plus and SO4 2 minus. Suppose we have H3PO4, phosphoric acid. When it dissolved in water, it gave 3H plus and PO4 3 minus. 1 mole acids are dissolving. They are dissolved in water. How many H plus ions produced by HCl? 1. How many H2SO4 produced by, how many H plus produced by H2SO4? 2. આ કેટલા હાઇડ્રોજન આયન પ્રોડ્યુસ કરે છે? 3. એ જે હાઇડ્રોજન આયન જેટલા પ્રોડ્યુસ કરે એને કહેવાય બેઝિસિટી ઓફ એસિડ. સો વોટ ઇઝ બેઝિસિટી ઓફ એસિડ? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બેઝિસિટી ઓફ એસિડ ઇઝ number of hydrogen ions produced on dissolution. On dissolution. Or we can say that number of replaceable ion, number of replaceable hydrogens are known as basicity of acids. जैसे आपसे पूछे कि what is basicity of HCl? 1, it is monobasic acid. क्या बोलेंगे? Monobasic, क्योंकि एक ही H plus दे रहा है. What about H2SO4? Dibasic, क्योंकि वो 2 H plus दे रहा है. What about H3PO4? Tribasic, क्योंकि वो 3 H plus दे रहा है. Basicity means how many H plus ions they are producing when they dissolve in water. अब आप बोलो कि basicity H2SO4 की 2 फिक्स है, तो ऐसा फिक्स नहीं है. क्यों फिक्स नहीं है? देखिए एक एग्जाम्पल. Suppose equation is given. H2SO4 मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है NaHSO4 and half H2 gas is produced. Balance equation is. अब आपसे पूछ रहा है इसमें what is basicity of H2SO4? આખો બંધ કરીને H2SO4 ને basicity 2 નહીં કહેવાનું. મેં એક જ डेफिनेशन दी चले कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. अब इसमें H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है टोटल? 2. इस मेटल ने उसमें से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, एक तो है अभी भी. हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1. सो बेसिसिटी ऑफ H2SO4 in this particular equation is 1. So either it is number of H plus ions produced on dissolution in water or the number of replaceable hydrogens when they react with metal. How to find equivalent weight? Equivalent weight of acid is equals to molecular weight divided by basicity of acid divided by basicity of acid.
जिस एसिड की जितनी बेसिसिटी होगी प्लेस करोगे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करोगे. जैसे व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4? Equivalent of H2SO4 will be its molecular weight, which is 98, and its basicity is 2, so it will be 49 grams. This is called equivalent weight of H2SO4. If basicity is 1, जैसे HCl में था, तो equivalent weight and molecular weight will be same because its basicity is 1. So how to find equivalent weight of acids? It is molecular weight divided by basicity of acid. Acetic acid की basicity कितनी हो? What is basicity of acetic acid? CH3COOH. જેટલા હાઇડ્રોજન એટલી બેસિસિટી એવું નથી કીધું. શું ડેફિનેશન લખાયું? નંબર ऑफ H प्लस आयन्स प्रोड्यूस्ड. तो जब आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो ये सिर्फ एक ही H प्लस आयन देगा. ऐसे चारों चार नहीं निकली जाएगा. और भला चार हाइड्रोजन दिखाई છે પણ એની બેસિસિટી 1 only because it gives only 1 H plus ions. Clear? Now equivalent weight of base. Third is equivalent weight of base. What is equivalent weight of base? It is molecular weight upon acidity. जैसे उसमें basicity था, इसमें acidity. Acidity of base. Now, what is acidity of base? Acidity of base means number of hydroxyl ions, OH minus ions, reduced on dissolved in water. Reduced on dissolution. ઓલામાં H plus ions છે, એમાં OH minus ion dissolution. जैसे we have NaOH, sodium hydroxide, we have barium hydroxide, we have ammonium hydroxide. When it dissolves in water, it produces how many OH minus ion? 1 OH minus. It is monoacidic. अगर इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो 2 OH माइनस देगा, मीन्स इट इज डाईएसिडिक. और अगर इसको डिसॉल्व किया तो ये भी 1 OH देगा, NH4 plus OH minus. So its acidity is 1. So acidity means the number of OH minus ions reduced when they dissolved in water. What is called acidity of base. And equivalent weight calculate करवा माटे molecular weight divided by acidity. अब निकालते हैं equivalent weight of salt. Equivalent weight of salts. Salts like sodium carbonate, salts like Al2SO4 thrice. इसमें कहिए ना एसिड है ना बेस है तो सॉल्ट है. H भी नहीं है, OH भी नहीं है. फिर हुआ AlCl3, Na3PO4, then Na2SO4. આ બધા salts હોય એના equivalent weight કેવી રીતના calculate કરવા? Equivalent weight of salt is equals to its molecular weight and divided by, ध्यान से देखना, number of metal atom जो सॉल्ट में प्रेजेंट हो, मल्टीप्लाई बाय इट्स वैलेंसी. मल्टीप्लाई बाय इट्स वैलेंसी. एक एक डिस्कस करते हैं. सपोज हमने Na2O3 लिया, इसका निकालना है Na2CO3. એનું મોલેક્યુલર માસ 100 એન્ડ કેટલું બે આવતું? આઈ થિંક 106 આવે. સોડિયમનું 23, કાર્બનનું 12, ઓક્સિજનનું 48. अब डिवाइड किससे करना है वो काम का. How many metal atoms are there? 2. What is the valency of sodium? 1. So if we divide by 2, we will have equivalent mass. कितना आएगा? 23 plus 6 plus 24. So it is 30, 50. This is equivalent weight of atoms. Suppose we want to calculate equivalent weight of AlCl3. The molecular weight 27 plus 3 into 35.5. Divide से नहीं करवाना, ये जोड़ना है. How many metal atom aluminum have? 1. What is the valency of aluminium? 3. So we have to divide by. Suppose we want to calculate equivalent weight of Al2SO4 thrice, aluminium sulfate. How to find?
First we have to write its molecular mass, that is 342. Calculate કરજો આવશે. Divide શેનાથી કરવાનું? Total metal atom 2 અને એની valency કેટલી? 3. એટલે you have to divide it by 6. This way we can determine equivalent masses of salts. एक और होता है equivalent mass of oxidizing and reducing agents. Equivalent mass of oxidizing agent or reducing agent or reducing agent. What are equivalent mass of oxidizing and reducing agent? क्या होते हैं oxidizing agent? Oxidizing agent accepts electron. They accepts electron in redox reaction. Reducing agent lose electrons in reaction, redox reactions. So how to find equivalent weights? It is molecular weight divided by number of electron gain or lost. ये हम redox चैप्टर पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो इक्विवेलेंट वेट किस किस का होता है? एलिमेंट, एसिड्स, बेस, salts, oxidizing agent and reducing agent. Clear? In general, if we write, then equivalent weight will be molecular weight या atomic weight divided by n factor. What is this n? N is valency for element, n is basicity for acid, n is acidity for base, n is valency into number of atom, number of metal atom for salt, n is number of electron accepts, n is number of electron lost in oxidizing agent. This is for element, this is for acids, this is for base, this is for salts, oxidizing and reducing agents. So n factor से equivalent और molecular weight differ करते हैं. n फैक्टर फाइंड करना आना चाहिए. ओके, अब हम आते हैं हमारी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे. उसका नाम है नॉर्मालिटी. नाउ व्हाट इज नॉर्मालिटी? नॉर्मालिटी कैपिटल एन से डिनोट होती है, डिनोटेड बाय कैपिटल एन. व्हाट इज नॉर्मालिटी? इट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट of solute dissolved in water to prepare 1 liter solution. To prepare 1 liter या 1000 ml solution. This is known as normality. So what is the unit of normality? It is gram equivalent per liter. This is per liter. Okay. क्या फॉर्मूला लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉट मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. क्या डिफरेंस है मोलारिटी और नॉर्मालिटी में? मोलारिटी में यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आता है, नॉर्मालिटी में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम. क्या था मोलारिटी में? weight of solute upon molecular weight, weight of solute upon molecular weight multiplied by 1000 upon volume of solution in. If you want to derive relation between them, just divide it. divide करेंगे भाई, डिवाइड करोगे तो weight of solute कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? नॉर्मालिटी अपॉन मोलारिटी इज ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर जतुरे से मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अभी हमने लिखा था क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. n को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो n विल बी इक्वल टू नॉर्मैलिटी अपॉन मोलारिटी इज डिफर बाय n. सो नॉर्मैलिटी इज n इंटू मोलारिटी. सपोज ऐसा दिया है कि 0.1 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन है. व्हाट इज इट्स नॉर्मैलिटी? H2SO4 માટે n ફેક્ટર શું થશે? 2. ડાયબેઝિક એસિડ n ફેક્ટર H2SO4 માટે શું, તો નોર્માલિટી શું થઈ જશે?
0.2. Suppose it is given that 0.05 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है. अब बताइए मोलारिटी कितनी होगी. एन फैक्टर पता होना चाहिए. इसका एन फैक्टर कितना होगा 2. OH ट्वाइस है ना, एन फैक्टर 2, एसिडिटी इज 2. सो व्हाट विल बी द मोलारिटी. मोलारिटी गोतवू છે એટલે નોર્માલિટી ને એન ફેક્ટર થી ડિવાઇડ કરવાનું. કેટલું આવી જશે 0.025 મોલાર. What is relation between normality and molarity? Normality is n into n. कौन ज़्यादा होता है. Normality ज़्यादा बड़ा होता है compared to molarity. Okay? जैसे क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल. .9 ग्राम H2SO4 dissolved in water to prepare 250 ml solution. 250 ml solution. What is normality and molarity? What is normality and molarity? कैसे निकाले. Weight of solute is given 4.9 gram. What is molecular weight? 98. H2SO4 का molecular weight. What is equivalent weight of H2SO4? 98 divided by 2. Why divide by 2? Its n factor is 2. It is dibasic acid. So it is 0.9. Volume of solution is given 250 ml. Put up all the values and calculate the answer. मोलारिटी फाइंड करनी हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 254 आवर्स. सो इट वुड बी इसको अगर 0 करें तो दिस वुड बी 20 1/5 मतलब 0.2 मोलार सॉल्यूशन. नॉर्मैलिटी निकालनी हो तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला यूज करना. गिवन वेट इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 volume of solution 250 0.1 sorry 0.4 hours. फॉर्मूला कभी फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे. 0.4 multiplied by 2 because its basicity is 2, so normality will be 0.4. Okay, this is the relation between normality and molarity. So many concentration units are interrelated. कैसे देखिए molality and percent weight by weight. Molality and percent weight by weight. How they are related? See, what is the formula of molality? Yeah, what is percent weight by weight? Molality and percent weight by weight. Molality is weight of solute, weight of molecular weight of solute into 1000 upon weight of solvent. Molality is weight of solute, molecular weight, weight of solvent into 1000. What is percent V by W by W? It's weight of solute upon solution, total weight multiplied by 100. अगर हमको दो वेट पता हो, जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो दोनों को ऐड करके हम प्लेस कर सकते हैं. तो अगर किसी की मोलालिटी पता है तो हम परसेंट वेट बाय वेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? क्वेश्चन दिया है 20% वेट बाय वेट H2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन. सोचें मोलालिटी, व्हाट इज इट्स मोलालिटी. अब आमाથી ઇન્ફોર્મેશન જે કોઈ અંદર हिडन है उसको बाहर निकालना. कैसे निकालें? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? 20 ग्राम. व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट? 80 ग्राम. and what is the weight of solution? 100 ग्राम. ये इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए. अब आप मोलालिटी की फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए. व्हाट इज मोलालिटी? वेट ऑफ सॉल्यूट 20, molecular weight of solute H2SO4 is 98 into 1000. What is weight of solvent? That is 80. If you solve this, you will have that.
So percent weight by weight if it is given, we can determine molarity. એને આવી રીતના ઇલેબરેટ કરતા ઓકે. પછી મોલાર, આમાંથી તમે પરસેન્ટ વેટ બાય વેટમાંથી મોલ ફ્રેક્શન બી ગોતી શકો. हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शंस? बे वेट है अपनी पास, सॉल्यूट का वेट है, सॉल्वेंट का सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, आप मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो. कैसे? हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शंस फ्रॉम दिस परसेंट वेट बाय वेट? डेफिनेशन खबर होगी जो दिस इज H2SO4 and water, solute and solvent. આનું વેટ આપ્યું છે कितने 20 ग्राम. इट्स वेट इज गिवन 80 ग्राम दिया हुआ है. ये रखो. मॉलिक्यूलर वेट दोनों के पता है 98. अनु मॉलिक्यूलर वेट 80. फाइंड आउट मोल्स, देन मोल फ्रैक्शन Na upon Ne plus Ne. So with the help of percent W by W we can also determine mole fractions. Clear? Now, if percent W by V and molarity are related to each other, then how to find percent W by V and molarity? Suppose we have formula of molarity. Weight of solute, molecular weight of solute multiplied by 1000 upon solution का वॉल्यूम. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. यहाँ लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100. बाकी का बचा हुआ यहाँ पे 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. આ બધું શું થઈ ગયું? This is percent W by V. So molarity is equals to percent W by V into 10 upon molecular mass, molecular weight. मोलारिटी पता हो तो परसेंट WY निकाल सकते हो, WY पता हो तो मोलारिटी निकाल सकते हो. जैसे कर दिया है 2 मोलार aqueous solution HCl. What is percent W by V? What is percent W by V? कैसे निकालेंगे? मोलारिटी दिया है 2, ये निकालना है परसेंट W by V इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है HCl का 36.5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे. परसेंट W by V will be 36.5 into 2 is 73 divided by 10, so it is 7.5. So all concentration units are interrelated with each other. If percent W by V given, we can determine molarity. फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो. कैसे? जैसे कर दिया है 20% weight by volume aqueous NaOH solution. What is molarity? You forward this formula. How to determine? આમાંથી hidden information બહાર કાઢવાની. Weight of solute is 20 gram. What is volume of solution? What is volume of solution? 100 ml. Percentage છે એટલે 100 ml. બસ બે વસ્તુ જોઈ છે, મોલારિટી આવી જશે. Weight of solute, molecular weight NaOH का 40 into 1000 upon volume of solution which is 100. It's 5 molar solution. Molarity is 5. आप formula में place करके भी निकालोगे तो 5 होगा. So units are interrelated with each other. Now one more sum by which we can determine all the types of units of concentration. एक sum बताती हूँ, सारे निकालेंगे उसमें से. Suppose ऐसा दिया है 2 मोलल aqueous solution, 2 मोलल aqueous solution of NaOH having density 1.25 ग्राम पर ml. इतना दिया है. कह रहा है what is percent weight by weight, percent weight by volume, molarity, normality
मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, फिर आप और क्या निकाल सकते हो, ppm, एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट। कैसे निकालेंगे? 6 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं इसमें छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है वो निकालेंगे बाहर। 2m aqueous solution, what it mean? 2 molal aqueous solution of NaOH. It means that, what it mean? 2 moles solute यानी NaOH in 1000 ग्राम वाटर। क्या मतलब होता है 2 मोलल का? 2 moles of NaOH in 1000 ग्राम वाटर। NaOH के मोल्स आ गए तो NaOH का वेट आ जाएगा। व्हाट इज वेट ऑफ NaOH? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 40, सो 80 ग्राम। सो वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया 80 ग्राम। दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1000 प्लस 80, so it is 1080. This is weight of solution. જો weight of NaOH એટલે solute આવી ગયું, weight of solvent છે, weight of solution આવી ગયું 1080. now density given है, कितना दिया है? 1.25 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी सॉल्यूशन का होता है, मास है सॉल्यूशन का, डेंसिटी है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। What is the relation between density, mass and volume? We know that density is mass upon volume. What is mass of solution given? 1080. Volume we can determine by placing density as 1.25. So what is the volume of solution? Volume of solution will be, it's 1080 divided by 1.25. So we have volume of solution in ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट है और वेट ऑफ सॉल्यूट है। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास है तो आप ये सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। कितना दिया वेट ऑफ सॉल्यूट? 80, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1080. विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी वी कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दीज फॉर्मूलाज वी रिक्वायर दीज 4 थिंग्स ओनली। किसी में कुछ चाहिए तो किसी में कुछ चाहिए, प्लेस करोगे आंसर। जबकि फॉर्मूला लिखिए उसमें ये सारी वैल्यूज प्लेस कीजिए, यू विल गेट द आंसर्स। सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन ऑल द कंसंट्रेशन यूनिट्स इफ 1 यूनिट इज गिवन। क्लियर? जैसे एक मैं आपको निकाल के बताऊं, हमको निकालना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये फाइंड करना। जस्ट पुट अप द फॉर्मूला। What is percent weight by volume? Weight of solute 80, volume of solution हो रहा 1080 divided by 1.25 multiplied by 100. Solve it. Percentage weight by volume, that is 80 into 100 into 1.25 divided by 1080. Decimal would be this, 80 into 125 divided by 1000. इसको सॉल्व करोगे आंसर। तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। बधाना फॉर्मूला लखो, एમાં वैल्यू प्लेस करो। सो ऑल कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। वी कैन कन्वर्ट वन यूनिट फ्रॉम अनदर। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो डिराइव होता है, लेकिन मैं आपको बता नहीं रही, आप सिर्फ उसको नोट कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी बहुत जगह पे काम आता है। प्लस molecular weight of solvent 1000 divided by molecular weight of solvent, 1000 divided by molecular weight of solvent। जनरली पानी होता है, जनरली सॉल्वेंट वाटर होता है मोस्टली, और इसका molecular weight 18 होता है। इसलिए x इक्वल्स m/m प्लस 55.5। मोलैलिटी अगर दिया है तो आप मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो ही 55.55,
सॉल्वेंट अगर बेंजीन हुआ तो यू हैव टू प्लेस हियर 78. सॉल्वेंट अगर इथेनॉल हुआ तो यू हैव टू प्लेस हियर 46. So depends upon the solvent, we have to use this formula. So lots of concentration units today we have done. It's very important for 11th as well as for 12th standard. Okay.